What's up everyone? Your boy Tapesh Kumar here. आज हम बात करने वाले हैं about scholarships and how you can get them. But first, क्योंकि आज Sunday है, it's time to go for a ride. ये देखो जरा क्या तारों पर जंजाल बिछा रखा है। So I just got back from the ride. 2 मिनट दो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ. What an amazing Sunday ride I had today. So I reached Throttle, which is in Gurgaon Faridabad road पे है. And वहाँ पे I met 2 of my pretty old friends. And I had no idea they were also coming. So we met up, we had a nice chat. And we also had a very nice photo shoot with our bikes. So in case you guys want to check out our photos, you can follow me on Instagram. My link is here. I'll also link my friend's Instagram in the description. He's also a pilot. So you guys can check him out as well. Okay, so now to today's topic. So Aj, like I had promised in one of the earlier videos, today I'll be talking to you about government sponsorships or scholarships for your CPL license. So at the outset, at the starting, my sincere apologies to everyone who is from general category. As you might have guessed and as you might already know, there is nothing at all for general people. So general category ke liye no scholarship, no sponsorship from the government. So if you are a SC candidate, a scheduled caste candidate, I have some good news for you. So the Ministry of Social Justice and Empowerment does have a scheme for SC candidates wherein they get 100% sponsorship for their CPL as well as their type rating, provided they do it in India from any of the DGCA approved flying schools or TRTOs. So in case any of you watching is a SC candidate, you can always go to the link which I have given in the description. Click on that link. If you're eligible for it, apply for it and you get 100% sponsorship. Okay, so if you're a ST candidate, scheduled tribe candidate, I have some bad news for you. Till about I think 2016 or 2017 tak, Ministry of Tribal Affairs, which is the ministry which handles ST candidates and their scholarships, they did have CPL as a part of their scholarship program for ST candidates, but unfortunately they have removed it now. So they have a list which is called the top colleges list, top institutions, something like that, ऐसा कुछ नाम है. उस लिस्ट में सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के विच आर लाइक अमंग्स द बेस्ट एंड उन सब के लिए द गवर्नमेंट विल गिव यू स्कॉलरशिप. उसमें पहले एक टाइम पे CPL का भी नाम होता था फॉर ST कैंडिडेट्स, बट अभी अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिन रिमूव्ड. ओके, सो मैंने आप लोगों को जो अभी बताया, दो स्कॉलरशिप्स अब आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ हर स्टेट में एक और स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड प्रीटी मच एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स टू देयर ओन स्टूडेंट्स, जो भी वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स होते हैं या SC, ST या फिर इवन OBC. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बट द प्रॉब्लम विद स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स इज, मैंने जितने पोर्टल्स चेक किए, हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट का ये था कि क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है कि दिस गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू स्कॉलरशिप फॉर CPL इन पर्टिकुलर. दे हैव स्कॉलरशिप्स
जिसमें दे हैव इट फॉर स्कूलिंग, दे हैव इट फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बट ये कहीं क्लियरली मेंशन कहीं पर भी नहीं है कि दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर CPL। सो मैंने क्या किया है, इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड लिंक्स फॉर ऑल द मेजर स्टेट्स इन इंडिया। उन सब के स्कॉलरशिप्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का लिंक क्लिक करके अप्लाई ऑन द पोर्टल, इट्स ऑल ऑनलाइन एंड उस पर हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके पूछ लो कि आपका स्टेट आपको पर्टिकुलरली अगर आप एलिजिबल हो तो आपको CPL के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है नहीं। Also some flying schools, for example IGRUA में it's a government owned flying school, तो IGRUA में क्या होता है कि SC और ST स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, which is not a very big amount, but then still it is something. However, although I do not recommend IGRUA, but still that's a very small factor जहाँ पर SC ST स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। Alright, so thank you for watching guys. This is pretty much all the information that I could find regarding scholarships in India. If you guys know of something else, अगर तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस आउट कर दी हो, drop it in the comments and so that other people can read it and it will help them out. Also, in case you like the video, if you think it is helpful, then please do subscribe to the channel and also show the video to someone जिसको तुम्हें लगता है कि इस वीडियो देख के हेल्प मिलेगी। That's pretty much about it and I'll see you guys in the next one.